Amla Construction Limited entered into the contract to construct a bungalow. Now we have a name of the company. Name of the company is Amla Construction Limited. And what is the work? What they are doing? The construction of an bungalow. The contract value is 19,50,000. Contract value is nothing but this is your contract price. कितने का होगा? 19,50,000 का. To be realized in the installment on the basis of the value of work certified by the architect subject to the retention of 10%. अब क्या बोल रहे हैं कि ये 19,50,000 वन शॉट पे नहीं देने वाले. What they are going to do, जैसे जैसे वर्क सर्टिफाइड होते जाएगा वैसे वैसे they are going to give the amount, but हमने थ्योरी में किया था कि उन लोग रिटेन कर देंगे so that कि जो भी अभी भी वर्क इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट हो सके. ये हमें अश्योरिटी देगा रिटेंशन मनी कि नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्टर अपना काम जो है वो अच्छे से करेगा. तो जो जितना भी वर्क सर्टिफाइड होगा उसमें से 10% दे विल रिटेन एंड देन दे विल गिव द बैलेंस अमाउंट टू द कॉन्ट्रैक्टर. Who will be giving the amount? Contractee will be giving the amount to the contractor. The work commenced on 1st of April 2013, but it remains incomplete on 31st 12 2013. अब क्या बोल रहे हैं कि इन लोग ने कंप्लीट स्टार्ट तो कर दिया था 1st 4 तक, दैट इज 1st अप्रैल को, बट अब तक जो भी काम था वो इनकम्प्लीट था. इन लोग कब का बोल रहे हैं? 31st 12 को. सो मतलब अभी हमारा बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मतलब ईयर एंड जो इन लोगों ने हमें बताया वो ईयर एंड क्या है? एज पर देम 31st December 2013. The facts and figures of the contract are plant charge to the contract at the commencement. Now see, before starting, just read the last line. Prepare a contract account showing therein the amount of the profit and loss to be transferred to the profit and loss account. हमें क्या prepare करना है? We need to prepare a contract account and just we need to find it out कि amount हम कितना अपने profit and loss account में transfer करेंगे. तो what is my advice class? सबसे पहले तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं. ठीक है. सो किसकी बुक्स है? इन द बुक्स ऑफ अमला कंस्ट्रक्शन लिमिटेड. सो जस्ट राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ अमला कंस्ट्रक्शन लिमिटेड. And this contract is for the period ended because they have given us the certain time period, correct? So it's better we write it down for the period ended. You can say for the period 1/4/2013 to 31st 12/2013. What we will do, we will read and accordingly we will start posting it up. ठीक है. डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना. particulars rupees. प्लांट चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट एट द कमेंसमेंट. एट स्टार्टिंग पे ही हमने क्या लिया? हमने प्लांट को ये रखा. we have just installed the plant, or you can say the plants we have sent to the site of 96,000. Now as I have always told you, we have a two option, either to write down opening and closing balance in the contract account, or only and only we need to write it down the depreciation. या आप अगर ओपनिंग लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको क्लोजिंग भी लिखना पड़ेगा, या तो फिर आप क्या कर सकते हो? सिर्फ डेप्रीसिएशन लिखोगे. सो वी विल राइट बोथ. Plant charge to the contract is nothing but to plant sent to site. So I'm just leaving first two lines. Like हम पहले होता है तो मटेरियल और वेजेस लिखते हैं अकॉर्डिंगली. तो इधर आप ये फॉर्मेट में भी जा सकते हो, और या तो फिर आप मतलब पहले अगर आपको पता है कि हाँ मटेरियल एंड वेजेस और समथिंग विल बी कमिंग, तो आप उसको लास्ट में भी लिख सकते हो. इट्स अप टू यू. Go to plant sent at site, or you can say install at site, 96,000 का. Material charge to contract, again this is nothing but material sent it to the site, 5,40,000 का. Contract account debit side. So to material
5,40,000. Next is wages paid. Again, it is an expense and contract account debit side. Expenses incurred on the contract. हमने कुछ expenses किए हैं contract के लिए, तो contract account where it will be recorded. Debit side, all the expenses, because see, contract account is a nominal account. So debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. It's nothing but it's mini profit and loss account. और nominal account के rule applicable होता है. So to overheads, or you can write it down to expenses as well. 1,16,250. Either to overheads or you can write it down the expenses. Both are correct. Total establishment expenses amounted to 1,23,000, out of which 25% is attributed to this contract. कितना established expenses हुआ था total? 1,23,000 पर ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना है? सिर्फ 25% है. तो हमें क्या करना है? We just need to find out 1,23,000 का 25% and then we have to write it down the amount. So again, it is an expense and it will be written on the contract account debit side. So to establishment expenses, $1,23,000 into 25%. 30,750. Out of the material issued to the contract, material costing rupees 12,000 was sold for 15,000. अब क्या बोल रहे हैं कि जो भी मटेरियल इन लोग ने इश्यू किया था, तो एट द लास्ट व्हाट दे हैव डन, मटेरियल जिसका कॉस्ट था 12,000 का, वो उन्होंने सेल कर दिया कितने में? 15,000 में दे हैव सोल्ड इट. सो since this the plant is going out and in the sale you are going to get down the money, so हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट ऑफ द मटेरियल सोल्ड इन आवर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, which will be recorded in the credit side. So by of of 12,000 rupees. Part of the plant value 6,000 was damaged on 1st 10/2013. मतलब 1st अक्टूबर को 6,000 का जो प्लांट था वो क्या हो गया? डैमेज हो गया. एंड द स्क्रैप रियलाइज वाज ₹900 ओनली. और इसका कितना स्क्रैप रियलाइज हुआ है? सिर्फ ओनली 900 रुपीज. तो ये जो प्लांट डैमेज हो गया, वेयर इट विल बी रिटर्न? WDV ऑफ अ प्लांट डैमेज आप कहां पर रिकॉर्ड करते हो? ऑब्वियसली ऑन अ क्रेडिट साइड. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के कौन से साइड पर करोगे? क्रेडिट साइड पर. बट आपको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा, तो डेप्रिसिएशन भी तब तक चार्ज करना पड़ेगा 1st 10 तक. सो अब तक हमें हमने पूरा नहीं पढ़ा, तो वी डोंट नो कि डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल और नॉट. सो अभी हम सिर्फ इतना लिख के रखेंगे कि बाय प्लांट डैमेज. बाय कि हम लेटर ऑन भूल ना जाए कि हमें ये पोस्ट करना है. Plant costing rupees 9,000 was transferred to another contract side on 31st 12/2013. मतलब at the end of the day इन्होंने 9,000 का जो प्लांट था, मतलब प्लांट which was costing rupees 9,000 was transferred to another plant. तो ऑब्वियसली हमने 1st अप्रैल से लेके 31st दिसंबर तक ये प्लांट को यूज किया है. So we need to charge the depreciation on it. So, and since the plant is transferred to another side, it will be recorded on the contract account credit side. But again, we need to charge the depreciation for the same.
So we will just, we don't know the amount right now, तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे by plant transferred another site. We don't know the amount, we will do the calculation and we will find it. Now, plant is to be depreciated at the rate of 10% per annum. कितने percent? 10% पर हमें depreciate करना है plant को. तो fine, we will depreciate the plant at the rate of 10%. Next is material in hand on 31st December 2013. So this is nothing but, this is material on hand is a closing stock of a material. So हम क्या पर लिखते हैं? Under the heading of WIP. So by WIP, in that on hand, material in hand, 52,500. Cash receipt from the contractee 9,18,000. Cost of work yet to be certified is 90,000. मतलब yet to be certified is nothing but it is uncertified. अभी तक भी certificate नहीं हुआ है, तो this is work uncertified. Work uncertified. How much? 90,000. अब देखो हमें वर्क सर्टिफाइड कितना है वो नहीं दिया है. वी नीड टू फाइंड इट आउट द वर्क सर्टिफाइड फर्स्ट. तो क्या फॉर्मूला था? हमने पता है पढ़ा हुआ है ये कि वर्क सर्टिफाइड फाइंड आउट करना है हमें. तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कितना रिटेंशन मनी है? 10% is a retention money. So out of 100 is 10% of the retention money is there. So cash received कितना हुआ होगा? 90%. I'm doing here the calculation of work certified. समझ में आया? How 90%? Because 10% का is the retention money they have told us. So received WC is work certified. So if 90% of the cash is received after subtracting 10% of retention money is how much? 9,18,000 is amounting to how much? 9,18,000. So 100% मेरा वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू का कितना? 100% का कितना? Just cross multiply and find out the work certified. 9,18,000 into 100 divided by 90%. Just cross multiply and find it out. Value will be how much? 10,20,000. So work certified is nothing but it's amounting to rupees 10,20,000. So just go over here and write it down. Work certified. अब क्या करेंगे? अब पहले डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट्स कर लेंगे. So first let's do the working note for the depreciation. So we need to find out WDV of plant damage, return down value of a plant damaged. Cost कितने का था? 6,000 का था. It's given class over here that out of the material, sorry, here a part of the plant costing 6,000 was damaged on 1st of October. So depreciation will be charged only till less depreciation. कहाँ तक चार्ज करोगे? फिर फॉर ओनली 6 months. कैसे 6 months? क्योंकि 1st March से लेके 1st April से लेके 1st of October तक ही कैलकुलेट करना है. So 6,000 into 10%
का डेप्रीसिएशन है, बट ओनली फॉर 6 months. So multiply by 6 divided by 12, amounting to 300. So 6,000 minus 300, 5,700 का वैल्यू है. सो प्लांट जो डैमेज हो गया हमारा, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 5,700. तो वी कैन जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, प्लांट डैमेज्ड, और हमने क्या कैलकुलेट किया इसका WDV, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू, और वर्किंग नोट की उसके लिए. सो राइट डाउन इन द ब्रैकेट वर्किंग नोट 5,700. Want me to give year? We can give year as well. Heading working notes. Now similarly हमने जो भी प्लान ट्रांसफर किया था अदर साइट पर, हम उसका डेप्रीसिएशन भी देख लेते हैं. सो प्लान ट्रांसफर टू अनदर साइट. कितनी वैल्यू का था वो जो ट्रांसफर हुआ है? 9,000 का था. सो 9,000 इज द कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन. But this contract is only for a 9 months from 1st of April to 31st of December. So you have to charge the depreciation only for a 9 months. So 9,000 into 10%, but for 9 months. The value of a depreciation will be 675. 9,000 minus 675, 8,325. So again, write it down this amount in the contract account, 8,325. The bracket I will be writing down that I have found out this amount through a working note. Now हमारे पास ओपनिंग मटेरियल है, मतलब प्लांट है, तो हमें क्लोजिंग प्लांट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज प्लांट एट दिस साइट, एंड वी नीड टू फाइंड इट आउट फर्स्ट. मशीनरी, और you can write down plant site, and for that also we are doing the working note. So write it down W1 in the bracket. Chalo, let's do the working note again for the same. You are finding the WDV of plant cost. Now कितने का प्लान था? 96,000 was the value. See over here, 96,000 की वैल्यू थी. इसमें से 6,000 का जो प्लान था वो क्या हो गया? डैमेज हो गया, जिसपे हमने देखो अभी डेप्रीसिएशन भी फाइंड आउट किया. और 9,000 का जो ये था प्लान था, दैट गॉट ट्रांसफर्ड. तो अब मेरी कॉस्ट कितनी हो गई आफ्टर सबट्रैक्टिंग ऑल दिस? इज 81,000. I need to charge the depreciation on it. बिकॉज देखो ना, 96,000 में से 6,000 का प्लान डैमेज हो गया, देन 9,000 का प्लान गॉट ट्रांसफर, तो ऑब्वियसली जो बच गया उसके ऊपर ही डेप्रीसिएशन फाइंड आउट करेंगे. सो 81,000 into 10%, but for 9 months. Because our end of the year is 31st of December 2013. So this will be 6075. Subtractancy 74925. So value of a plant is 74,925.
So with this we are done. अभी सबसे पहले हम notional profit find out कर सकते हैं. Credit side is higher than the debit. So credit side is how much? 12,63,450. Write this on both the sides. Or debit side ka total is 10,44,000. So we got a notional profit. So write it down to notional profit. Carried down 2,19,450. And this will be brought down over here by profit brought down 2,19,450. Now हमें ये नहीं पता कि कितना complete हुआ है contract. कितने, what is the value of a contract which has been completed, correct? So we can find it out obviously. Percentage of work certified will be equal to जितना work certified हुआ है divide कर दो contract price से, तो आपको मिलेगा कितना percentage of the work is completed into 100. So your this is 10,20,000 work certified is. Contract price is also given in the question, which is how much? 19,50,000 multiplied by 100. So this will be 52.31%. तो कितना काम complete हुआ है? 52.31% of the work is been completed. तो ये मतलब कितना? 2/3 of the work is completed. So we have to take, hence the 2/3 of the notional profit will be transferred to the profit and loss account. So profit transferred to profit and loss account. So 2/3 of notional profit. I'm not writing down the formula again now. That is 2,19,450 multiplied by cash received divided by work certified ka percentage. So 90 is a cash received after retention money, keeping aside the retention money, and 100 is the work certified. ठीक है, again 2/3 of into notional profit into cash received divide by work certified. So this will be equal to how much? Rupees 1,31,670. तो यहाँ पर लिखेंगे to profit and loss account. You have find it out this amount through a working note. So just write it down, working note in the bracket. 1,31,670 rupees. Obviously, this amount is higher. 2,194. So जो भी balance बचेगा that will go in the reserve. So to work in progress reserve. So this might so done. If you want, you can even give the numbers to the working notes. हाँ, ये work certified का चाहिए तो first number दे दो. This WDV of the plant second. This one will be third. Both we have done it for the plant at site. And the fifth one के कितना transfer किया है हमने. So if you give the working notes, you can even write it down the working notes over here. Okay, this is fifth working note.
प्लांट डेथ साइट का वर्किंग नोटिस नंबर 4, प्लांट ट्रांसफर का वर्किंग नोटिस 3, and we are done with our sum.